Good morning, dear HSC student and all science lover. At last videos, we started as a reproduction in lower and higher plants. In that, we started re- reproduction, sexual reproduction. What is sexual reproduction? What is fragmentation? What is vegetative reproduction? What is the artificial method? Cutting, grafting, all see drafting, tissue culture method. We started as tissue culture method and ended then sexual reproduction. Microsporogenesis. What is microsporogenesis? That is important for state board. Development of male gametophyte. What is the development? Pollen grain. Then structure of anatropous ovule. Most common type है उसका anatropous ovule का. In that uniovulate, multiovulate. Then part of ovule. What is the part of ovule? That is funicles, hilus, nucleus. Megasporogenesis to synthesis of megaspore mother cell is called as a megasporogenesis. Process of formation of haploid megaspore from megaspore mother cell. Then function of megaspore. What is the function of megaspore is very important for 4 marks in state board. Then this diagram explanation which is given by bhartisolution.com. Then what is pollination? What is pollination? Then cross pollination, type of cross pollination. Then agent of pollination. Through pollination occurs is called as the agent of pollination. In that abiotic and biotic. Abiotic in that wind and water. In biotic, that is insect, birds, bats and animal, human being also included. Comparison of a different mechanism of pollination in that anophily, hydrophily, entomophily, orthophily. This like that outbreeding of devices. Then device observed in plant in unisexuality, that is the example of papaya. Dichro Dichogamy, that is example of sunflower. Prepotency in that example of apple. Hercogamy in that example of calotropins, that is in our mother tongue it is called as a rui. Then unisexuality, this started the table which in that unisexuality diagamy, proteny will seal. Then today's we started as a pollen pistil interaction. In pollen pistil interaction, pistil has ability to recognize right type of pollen. In that we say that pistil has ability to recognize right type of pollen. Right type of pollen having identified by pistil that having that ability to recognize the right type of pollen. Special proteins help in determine compatibility. Physiological mechanism operates on stigmatic surface. On stigmatic surface, physiological mechanism operates. Compatible pollen absorb water and nutrients. In that, compatible pollens have ability to absorb water and nutrients. Pollen tube emerges from germ pole and passes through style to ovule. Tip of pollen tube enters synergids. In that, tip of pollen tube enters synergids. Growth of pollen tube is determined by specific chemicals. Pollen grains can be induced to grow an artificial medium having sucrose and boric acid. This is very important for exam point of view, and for NEET NCERT explanation I will give you, that is sucrose and boric acid in vitro tube growth. MCQ is created here. Pollen grain can be induced to grow on artificial medium having dash dash and dash dash. That the solution of that this MCQ is pollen grains can be induced to grow on artificial medium having sucrose and boric acid. Artificial hybridization. In artificial hybridization, crop improvement and plant breeding programs are run. Selected desired pollens are hand-picked and pollinated. सिलेक्टेड डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर हैंड पिक, हाथों से लिया जाता है पोलन ग्रेन्स एंड जिस फ्लावर पे पॉलिनेशन होना चाहता है उस पे वो रखा जाता है. रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें हम देख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स. ये चैप्टर में अगर कोई इम्पॉर्टेंट है, अगर नीट के लिए, सीईटी के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए क्वेश्चन अराइजेस होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 marks, 3 marks एंड 4 marks. डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
diagram of double fertilization, explanation of double fertilization. In that explanation, one marks question arises from each and every sentence from this. Please keep in mind, each and every sentence arises 2 mark, 1 mark questions from NEET also. Complete fertilization mechanism where both male and female gamete are participate. Both male gamete where both male gamete participate. Complex fertilization mechanism. ये complex fertilization mechanism है. Both male gamete participate. In that both male gamete are participate. Participation features of angiosperm. What is mean by angiosperm? Do you know the angiosperm? Angiosperm is nothing but flowering plant. जिस plant को flower arises होता है उसे angiosperm कहा जाता है. Progamy, pollen tube entering the ovule through micropyle. Most common type enters, synergites and releases its content into two non-motile male gametes. Non-motile male gamete, that is जो male gamete खुद के खुद डेवलपमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं नॉन मोल मोटाइल गैमेट्स. चलाजोगैमी है एंट्री टू पोलन ट्यूब थ्रू चलाजोगैमी. व्हाट इज मीन बाय चलाजोगैमी? 1 mark क्वेश्चन डेफिनेशन इज अराइजेस. MCQ here created. What is chalazogomy? Entry of pollen tube through chalaza is called as a chalazogomy. Please keep in mind what is mean by chalazogomy. Entry of pollen tube through chalaza. Entry of pollen tube through chalaza. Mesogamy. Entry of pollen tube through integument. Siphonogamy. Non-motile gamete present in pollen tube. Chalazogomy, mesogamy, siphonogamy. These three terms which is very very important for exam point of view, for definition point of view, and for state board important question type of view. So what is mean by chalazogomy? Entry of pollen tube through chalaza is called as a chalazogomy. What is mean by mesogamy? Entry of pollen tube through integument is called as a mesogamy. Then siphonogamy. What is mean by siphonogamy? Siphonogamy means non-motile gametes present in pollen tube. Non-motile gamete present in pollen tube. pollen tube में जो non-motile gamete present रहते हैं उसको कहते हैं siphonogamy. Then next is process of double fertilization. In that process of double fertilization, this is also important for explanation, for descriptive question in state board. Process of double fertilization. Process of double fertilization in embryo sac. In that syngamy. Generative fertilization इसमें होता है. One male gamete unites with egg cell. One male gamete unite with egg cell, that is n plus n is equal to 2n number. zygote form होता है 2n का. embryo form होता है generative fertilization. Then it is triple fusion, that is vegetative fertilization. One male gamete unite with secondary nucleus. One male gamete that is one male gamete unite with secondary nucleus, then formation of a triple fusion. इसको कहते हैं triple fusion. One male gamete fuse with secondary nucleus and triple fusion इससे होता है. PEN primary endosperm nucleus. PEN primary endosperm nucleus. एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसमें होता है. और प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन दैट वी सी दैट सिंगैमी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है. ट्रिपल फ्यूजन जो है वे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है. फॉर एनसीटी फॉर नीट पर्पज generative fertilization and vegetative fertilization MCQ are created. What is generative fertilization? What is vegetative fertilization? And for state board, generative fertilization and vegetative fertilization, this is also very very important. In that next we saw the process of double fertilization in embryo sac in syngamy and triple fusion. Syngamy जो है generative fertilization है. One male gamete unite with egg cell. One male gamete unite with egg cell. One male gamete unite with
egg cell, then 2n number form, zygote form, embryo form, and generative fertilization occur. This is a very short and sweet notes which is really helpful to us in state board studies, NEET studies, and CET exam point of view. Then triple fusion, we saw that triple fusion in that vegetative fertilization, one male gamete unite with secondary nucleus. Here we see that one male gamete unite with secondary nucleus, then formation of a triple fusion, that is PEN, that is primary endosperm nucleus. primary endosperm nucleus, एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है. दिस इज अ वेरी क्लिस्टर क्लियर differentiation between vegetative or generative. Okay, then next, both male gametes are utilized in the fertilization process, hence it is described as a double fertilization. both male gametes are utilized, दोनों मेल गैमेट जो है यूटिलाइज करते हैं फर्टिलाइजेशन में और दो मेल गैमेट का यूज होता है, इसकी वजह से इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहता है. डबल मीन्स टू. व्हाई टू? बिकॉज two male gametes are utilized in double fertilization, hence it's called as a double fertilization. Then significance of double fertilization. What is the significance of double fertilization? That is unique feature of angiosperm. Significance of double fertilization, unique feature of angiosperm concerned with production of a seed, then develop into embryo which in turn form new plant. Triploid, that is primary endosperm nucleus form endosperm nutritive tissue for developing embryo. Restoration of diploid chromosome number, avoid polyembryony. इसके ये सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन के. ये डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म में. जिसको फ्लावर्स आते हैं इसी में ये डबल फर्टिलाइजेशन का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ अ सीड, ये जो है प्रोडक्शन ऑफ सीड क्रिएट करता है. जिसमें फ्लावरिंग होता है, सीडिंग होता है, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है विच टर्न्स फॉर्म न्यू प्लांट. एंड ट्रिप्लॉइड, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म एंडोस्पर्म nutritive tissue for developing embryo. Restoration of diploid chromosome number, avoid polyembryony. Avoid polyembryony. This is a very important feature of significance of double fertilization, and this is very important for 4 marks in state board, HSC board. Okay, then development of endosperm post fertilization event. Development of endosperm, that is post fertilization event. Development from triploid primary endosperm nucleus. Development of embryo and endosperm is a simultaneous. Endosperm also regulate growth of embryo. Endosperm also regulate growth of embryo. अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में, न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म में, अगर आप कोकोनट का एग्जांपल लेंगे तो कोकोनट में जब तक प्लांट उस कोकोनट से ग्रो नहीं हो जाता, उसका शूट फॉर्मेशन नहीं हो जाता, उसका प्लांट का ग्रोथ नहीं हो जाता, तब तक वो हम जिसको इन अवर मदर टंग इट इज़ कॉल्ड एज अ खोबरे, वो जनरली उसको न्यूट्रिशंस देता रहता है जब तक कि वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता. इसकी वजह से ये एंडोस्पर्म इसके लिए प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में हम देखेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, नो वॉल फॉर्मेशन, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स उसमें रहता है, वॉल फॉर्मेशन है लेटर स्टेज में. कोकोनट का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कोकोनट में अंदर पानी रहता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रहती है, वॉल नहीं रहती. कोकोनट का अगर आप फ्रूट देखेंगे तो उसमें कौन सी भी वॉल नहीं रहती, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल उसमें रहता है और उसी वैक्यूल में वाटर रहता है जिसको हम कोकोनट वाटर बोलते हैं. वॉल फॉर्मेशन एट लेटर स्टेज इसमें हमको देखने को मिलती है. नेक्स्ट है सेलुलार. सेलुलार में डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. अगर इसमें देखेंगे हम वॉल फॉर्मेशन रहती है. नंतर हेलोबियल है. हेलोबियल में हम देखेंगे फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन. 2 सेल्ड यूनिक्लियर अनइक्वल रहती है, स्मॉलर चलाजा सेल एंड लार्जर माइक्रोपॉइल सेल रहते हैं. फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होती है. मोजाइक एंडोस्पर्म एक टाइप है और मोजाइक एंडोस्पर्म में इट इज़ ए वेरिएशन इन द एंडोस्पर्म हैविंग टिश्यू ऑफ अ 2 डिफरेंट टाइप. कॉर्न का हम एग्जांपल ले सकते हैं. एक ही मेज का जो कॉर्न रहता है उसमें अलग अलग टाइप के सीड हमको देखने के वो मिलते हैं. एक ही में ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर
ऐसे कलर में हमको देखने को मिलते हैं, इसको मोजाइक एंडोस्पर्म हम बोल सकते हैं। इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के हैविंग टिश्यू हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्स्ट वर्ड इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर आपने मेरे बाकी के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स टू सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। The process of development of zygote into embryo is called as a embryogenesis. In simple word, we say that embryogenesis is nothing but synthesis of embryo is called as a embryogenesis. In proper definition अगर हम embryogenesis की देखेंगे तो process of development of zygote into embryo is called as a embryogenesis. The process of development of zygote into embryo is called as a embryogenesis. Zygotic embryo is situated towards micropolar end. Zygotic embryo is situated towards micropolar end in embryonic sac. Neat important MCQ here created, that is zygotic embryo is situated towards dash dash in embryo sac, that is micropolar end. When some amount of endosperm is formed, then only growth of embryonic start. Some amount of endosperm is formed, then and then only growth of embryo start. Zygote develops wall around it and becomes zoospores. Spore divide into 2 pro-embryo, 2-celled embryo. Okay. देन लार्ज सेल इसमें आता है, टूवर्ड्स माइक्रोपोल रहता है, सस्पेंशन इनिशियल रहता है। अगर आप रूट कैप वगैरह आप देख सकते हैं, स्मॉलर सेल है, टूवर्ड्स चला जा रहती है स्मॉलर सेल, एपेकल सेल रहती है, माइटोटिक डिवीजन उसमें होती है, 8 सेल ऑक्टेट रहता है, इसका स्मॉलर सेल का ऑक्टेट रहता है, 2 लैटरल कॉटलिडॉन्स इसमें रहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे पी प्लांट का, तो वटाना हम जिसको बोलते हैं उसके 2 कॉटलिडॉन रहते हैं, तो ये स्मॉलर सेल का एग्जाम्पल आ सकता है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ सिमिलर octet stage in dicot and monocot. मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटलिडॉन का रहता है और डाइकॉट एम्ब्रियो जो रहता है 2 कॉटलिडॉन का रहता है। सीड्स एंड फ्रूट डेवलपमेंट हम बाद में देखेंगे। बाय।